next module, that is Fourier series. Okay, Fourier series, just like you had Taylor series, Maclaurin series in the first semester, the same type of series. Okay, there are some conditions which are to be satisfied. So a function f of x defined in the interval can be expressed as a Fourier series if the function and its integral are finite and single valued. So I told you what is single valued when we did complex number. We cannot have more than one value for that function. Similarly, discontinuous. Discontinuity is finite in number, finite number of maxima and minima. These three conditions are called as Dirichlet's condition. Okay, all these things are not required from exam point of view. Okay, it is only the definition part I'm giving you, but exam point of view need not check all these conditions. Directly you have to express the function in terms of a Fourier series. Okay, also we have one more condition, that is periodic function. So periodic function means if the function repeats after every particular term, like f of x plus a is equal to f of x, then f of x is said to be a periodic function with period a, just like your sine and cos function. Sine of 2 pi plus theta is sine theta. Similarly, cos of 2 pi plus theta is cos theta, etc. So here, the main definition is this: any periodic function f of x of period 2 pi which satisfies Dirichlet's condition can be expressed as a Fourier series in the interval c comma c plus 2 pi as f of x is equal to a0 by 2 plus summation n varying from 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. So in the problem, you will be given a function f of x. You will be asked to write the Fourier series for that function. Okay, you need not check whether it is a periodic function or it satisfies this Dirichlet's condition. Nothing you have to do. You have to just expand or write this function in this particular form. So what are a0, an and bn? These are called as the Fourier coefficients, where a0 is defined as, okay, length of the interval is always equal to 2 pi. How to calculate the length of the interval? It is c plus 2 pi minus c. Okay, that is b minus a will be called as the length of that interval. So here length of the interval is 2 pi in this case. A0 is defined as 1 upon pi. If the length of the interval is 2 pi, then 1 upon pi will come here. Whatever is the interval given, write that as a lower limit and upper limit. And then whatever is the function given, that is f of x dx. Okay, that is the a0. An will be same thing. Only thing with an we have cos nx. So it will be f of x into cos nx. And bn is equal to f of x into sin nx. Okay. So here in this whole chapter, you will be given a function and you will be asked to calculate or write the Fourier series for that particular function. So your aim is to calculate a0, an and bn, and then substitute those values in this expansion, in the Fourier series, to get the Fourier series for that particular function. Okay, that will be our aim. So these are lengthy problems. You can expect 8 marks questions from these Fourier series, because if you calculate a0, an, bn, 3 integrations are there, and all these values are to be substituted here to get the Fourier series for that particular function. Okay, so here, so how to remember this again? Whatever, if the length of the interval is 2 pi, then pi will come. Everywhere you have 1 by pi outside, 1 by pi. Integral, whatever is the limit interval given, write that as lower limit and upper limit. In a0 we have only f of x. In an we have f of x into cos nx, and in bn we have f of x into sin nx. Okay, so we'll just take and before starting the problems, some concepts are required here. These 4 formulas. Okay,
2 sine A cos B, 2 cos A sine B, 2 cos A cos B, 2 sine A sine B. These 4 formulas you have to remember it correctly. 2 sine A cos B is sine A plus B plus sine A minus B. What is 2 cos A sine B? Anybody? 2 cos A sine B. Anybody can unmute and tell what is 2 cos A sine B. Or write in the chat box. कैसे याद रखना है पता है? What is sin A plus B सबको पता होगा. What is sin of A plus B? It is sin A cos B plus cos A sin B. अगर sin A plus B का फर्स्ट टर्म होता है sin A cos B. sin A plus B का फर्स्ट टर्म होता है sin A cos B. अगर हमें sin फर्स्ट टर्म चाहिए ये एक्सपेंशन का तो हमें दोनों को ऐड करना है. और sin A plus B का सेकेंड टर्म होता है cos A sin B. अगर हमें cos A sin B चाहिए तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है. 2 cos A sin B sin A plus B minus sin A minus B. Okay, that is why it is like, if you don't remember this, always I think all of you know what is sin of A plus B and cos of A plus B, or sin of A minus B and cos of A minus B. So just expand this and see. If it is sin of A plus B, you get the first term as sin A cos B. First term is sin A cos B. ठीक है, तो हम दोनों को, अगर इसका भी फर्स्ट टर्म sin A cos B होता है, दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमें आता है 2 sin A cos B. इसका भी फर्स्ट टर्म sin A cos B, सेकेंड टर्म इज cos A sin B. लेकिन हमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म कैंसिल होके वी विल गेट ओनली cos A sin B. तो cos A sin B sin A plus B minus sin of A minus B. Similarly cos A cos B and sin A sin B. These 4 formulas तो हमें याद रखना ही है पूरे. Even in the case of trigonometry, what is that? Laplace transform also, and even in case of Fourier series also, remember these 4 formulas. Then the next concept, cos of n pi. Okay, cos n pi is replaced by minus 1 raised to n, which means that when n is an odd number, n has to be an integer, not a fraction. N has to be an integer. So it's true only for when n is an integer. So cos n pi is minus 1 raised to n. अगर n odd है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1. अगर n even है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी +1. तो cos of n pi is minus 1 raised to n. Okay, if n is odd, -1. If n is even, it is +1. And sin n pi is always equal to 0 if n is an integer. Sin pi 0, sin 2 pi, sin 3 pi, all the sin multiples of pi is equal to 0. ठीक है, ये 4 है, ये 2 हो गए. Next, what we remember, since we have to calculate this integration part, integration का जो formula है, either this formula or the generalized rule of integration by parts. I told you while doing complex also how to use this. अगर हमें uv अप्लाई करना है तो पहले हम लिखते हैं u इंटेग्रल v. तो v1 का मतलब होता है इंटेग्रल ऑफ v. फिर सेकेंड टर्म माइनस होता है, फिर u का डेरिवेटिव v1 का इंटीग्रेशन, फिर u डैश का डेरिवेटिव v2 का इंटीग्रेशन. Go on differentiating the u term and integrating the integral v term. This we are going to apply it many places in Fourier series. The generalized rule of integration by parts, we are going to apply it many places. ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट है और ये बहुत बार यूज होगा. एंड इन सम ऑफ द प्रॉब्लम्स वी मे हैव टू अप्लाई दिस आल्सो. इवन cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, sin स्क्वायर थीटा, ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो यूज्ड. ठीक है, तो ये पहला हमें एक बेसिक आना चाहिए, ये सब जो फॉर्मूलाज है हमारे. So this is, we are going to apply it almost all the problem. This is applied, this formula is applied when you use an algebraic function. Okay, so we'll take the first problem. Find the Fourier series to represent f of x is equal to x square in 0 to 2 pi and hence deduce that. These are very lengthy problems, so please write down each and every step.
बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं बिकॉज टू कैलकुलेट A0 AN एंड BN और उसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का तो आता ही है इसमें से एक। ठीक है, find a Fourier series to represent f of x is equal to x square in 0 to 2 pi and hence deduce that pi square by 12 equal to 1 upon 1 square minus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square etc. ठीक है, हमें क्या करना है, we need not check whether it satisfies Dirichlet's condition or is it a periodic function, कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। in your syllabus you just have to express that as a Fourier series और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। So हमें क्या करना है, f of x is equal to x square दिया है, so we know the Fourier series is equal to a0 by 2 plus summation n varying from 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx। पहला हमें ये सीरीज लिखना है, ये सीरीज लिखने के बाद we have to calculate what are a0 an and bn। okay, now when you see Kumbhojkar they have taken a0 plus, मैंने a0 by 2 लिया है ताकि a0 an और bn के फॉर्मूला में 1 by pi बाहर आ जाए। I have taken a different form, not like Kumbhojkar what they have done। a0 by 2 plus summation n varying from 1 to infinity an cos nx, तो हमें a0 निकालना है, तो a0 निकालने के लिए और फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर एंड इंटरवल दिया है 0 to 2 pi। ठीक है, तो a0 इक्वल टू, now a0 is 1 upon pi, कितना है, लेंथ ऑफ द इंटरवल इज 2 pi, तो यहाँ पे पाई आ जाएगा, इंटेग्रल दिस इज द वट एवर दिस इज जनरल फॉर्मूला फॉर a0, लेकिन यहाँ पे हमको इंटरवल पता है 0 to 2 pi, तो आई विल राइट a0 इज इक्वल टू 1 upon pi इंटेग्रल 0 to 2 pi f of x is equal to x square। ये पूरा फॉर्म, पूरे चैप्टर में यही फॉर्मूला हमको यूज करना है और कुछ नहीं करना है। इन ऑल दिस होल चैप्टर फोरियर सीरीज में हमें खाली a0 an और bn निकालना है और कुछ नहीं करना है। only thing will have different intervals, some other properties maybe can be applied to get a simpler form of the Fourier series, but otherwise same हमें हर जगह a0 an और bn ही निकालना है। ओके, तो अभी मैंने f of x को पुट किया यहाँ पे, नॉट इंटीग्रेट x स्क्वायर, we will get x cube by 3 between the limit 0 and 2 pi। 1 x square को इंटीग्रेट किया तो x cube by 3 आ गया 0 to 2 pi। apply the upper limit minus the lower limit। अगर if I apply the upper limit 1 by, I've taken this 3 outside, if I apply the upper limit x के बदले 2 pi, so 2 pi the whole cube and when x is 0 minus 0। ठीक है, that is equal to, simplify this and tell me what will be the value of a0। a0 में हमें खाली फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेट करना है, जो भी इंटरवल दिया है वो लिमिट लेके हमको इंटीग्रेट करना है। So what is the value of a0? 2 pi the whole cube upon 3 pi। 2 pi the whole cube क्या हो जाएगा, 8 pi cube। 8 pi cube upon 3 pi, तो एक pi कैंसिल होके बचेगा 8 pi cube by 3 pi और we will get 8 pi square by 3। ठीक है, तो पहला वाला कांस्टेंट आ गया a0। तो अगर a0 निकालना है तो जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करना है, अगर an निकालना है तो ये फंक्शन को cos nx से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका इंटीग्रेशन निकालना है, और अगर bn निकालना है तो फंक्शन को sin nx से मल्टीप्लाई करना है और इंटीग्रेट करना है। दैट इज ओनली द एम। ठीक है, पूरे हमको यही करना है पूरे चैप्टर्स में। अगर a0 पूछा है तो खाली फंक्शन को डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना है, an पूछा है तो दे विल आस्क ऑल द थ्री, बट इफ टू कैलकुलेट an we have to multiply the function by cos nx and then to calculate bn multiply f of x by sin nx। okay, so हमारा a0 आ गया 8 pi square by 3। now we have to calculate an। हर एक कॉन्स्टेंट्स निकालने हैं, फोरियर कोएफिशिएंट्स निकालने हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, नाउ व्हाट इज an? an का फॉर्मूला f of x मल्टीप्लाइड बाय cos nx, बाकी सब सेम है, और 1 by pi इंटेग्रल 0 to 2 pi x square cos nx dx। an is equal to 1 by pi
इंटीग्रल 0 to 2 pi x square cos nx dx. ओके, अभी हमें इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन में देर आर टू फंक्शंस ऑफ एक्स, एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है cos nx. So we have to apply UV rule, correct? You have to apply UV rule or the integration by parts. तो कौन सा u लेना है, कौन सा v लेना है, पहले ये बताओ. यस, तो सबसे पहले कौन सा आएगा? एक्स स्क्वायर इज एन अलजेब्रिक फंक्शन एंड cos इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो किसको लेना है हमको? पहले u हमें अलजेब्रिक फंक्शन को लेना है. यस, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा u, cos nx हो जाएगा v, है ना. एक्स स्क्वायर इज u, cos nx इज v. तो पहला टर्म क्या है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का? u इंटीग्रल v. सो राइट दैट टर्म फर्स्ट. द फर्स्ट पार्ट विल बी u इंटीग्रल v. u हमने वैसे का वैसे ही रखा है, ये हमारा v है, cos nx इज v. तो cos nx का इंटीग्रेशन यहां पे लिखना है, u इंटीग्रल v. तो sin nx अपॉन n, ठीक है, माइनस. नाउ आई एम टेलिंग, डोंट ट्राई टू सिंप्लीफाई इन माइंड एनी ऑफ द साइंस. जैसा डेरिवेटिव आता है वैसे ही लिखते रहो, जैसा इंटीग्रेशन आता है वैसे ही ब्रैकेट में लिखते रहो. सिंप्लीफाइड इन द नेक्स्ट स्टेप. ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होता है. सो व्हाट यू हैव टू डू इज राइट u, राइट इंटीग्रल v. सेकेंड टर्म इज ऑलवेज नेगेटिव. इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये ब्रैकेट टर्म का इंटीग्रेशन यहां पे लिखना है. तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos nx और एक n आ जाएगा, तो इसके लिए n स्क्वायर हो जाएगा. नेक्स्ट टर्म इज पॉजिटिव, इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2, ये ब्रैकेट टर्म का इंटीग्रेशन. तो माइनस cos nx का इंटीग्रेशन इज माइनस साइन nx अपॉन n एंड ऑलरेडी यू हैव n स्क्वायर, तो यहाँ पे n क्यूब हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट विल बी माइनस डेरिवेटिव ऑफ 2 इज 0. तो हम लोग नेक्स्ट टर्म्स वी आर नॉट राइटिंग बिकॉज द डेरिवेटिव ऑफ 2 इज इक्वल टू 0. क्लियर? एनी डाउट इन दिस यूवी मेथड? बिकॉज पूरे फोरियर सीरीज हमको ये अप्लाई करना पड़ेगा. एट मेनी प्लेसेस वी हैव टू अप्लाई दिस यूवी मेथड, जनरलाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड. ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है, रिपीटिंग इट अगेन. पहले हमें u और v डिसाइड करना है. तो अगर अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो बाय दैट रूल आइदर LIAT और ILAT, द फर्स्ट टर्म इज अलजेब्रिक, फर्स्ट कम्स अलजेब्रिक फंक्शन देन ट्रिग्नोमेट्रिक कम्स. तो इसीलिए अलजेब्रिक फंक्शन को u लेना है और ट्रिग्नोमेट्रिक को v लेना है. अगर अलजेब्रिक फंक्शन u है तो पहले u यहाँ पे लिखना है, इसका इंटीग्रेशन v का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे u ही लिखना है और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ v लिखना है. फिर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका इंटीग्रेशन 10. फिर प्लस, ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस होता है, 2x का डेरिवेटिव 2, इसका इंटीग्रेशन. ठीक है, टिल द डेरिवेटिव ऑफ u बिकम 0. कंटिन्यू दिस प्रोसेस बिटवीन द लिमिट 0 एंड 2 पाई. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, अप्लाई द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. अप्लाई द अपर लिमिट मतलब x के बदले 2 पाई और x के बदले 0. तो सब्स्टिट्यूट दैट. ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट वी हैव टू अप्लाई. इसके पहले 2 पाई, x को अगर 2 पाई पुट किया तो 2 पाई द होल स्क्वायर साइन n 2 पाई बाय n. मैंने पूरा एज इट इज रिप्लेस किया है. ठीक है, व्हेन x के बदले 2 पाई करके मैंने तीनों टर्म्स लिख दिए हैं. एंड व्हेन वी अप्लाई द लोअर लिमिट 0, x 0 है तो पहला टर्म 0, यहाँ पे भी x है तो 0, साइन 0 इज 0, इसीलिए यहाँ पे भी 0 आ गया. ठीक, सो लोअर लिमिट इज इक्वल टू 0. खाली अपर लिमिट का पार्ट रहेगा. उसमें भी अपर लिमिट में, now remember in the Fourier series n takes the values from 1 to n. It doesn't take 1 point, 2 point or any fractions. N takes the values from 1 to n. 1 to infinity, sorry. So n takes always the integer value. So here we have sin 2 pi 0 हो जाएगा and cos 2n pi. Now what is cos 2n pi? Is it 1 or minus 1?
cos 2n pi is an even multiple of pi or odd multiple of pi? Cos 2n pi is an even multiple of pi, है ना? 2n, अगर n odd भी रहेगा, लेकिन if 2 is multiplied by n, it is going to be an even multiple. तो मतलब cos 2n pi will become 1 and sin will become 0. तो हमें सिंप्लीफाई करना है. तो ये sin 2n pi 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी sin 2n pi 0 हो जाएगा, बचेगा खाली cos 2n pi. एंड cos 2n pi की वैल्यू 1 है, तो -1 अपॉन n स्क्वायर. ठीक है, जस्ट डू इट सिस्टमैटिकली, यू विल गेट द आंसर. कोई इतना डिफिकल्ट वाला नहीं है ये. ठीक है, 3 इंटीग्रेशन हमको करने हैं. एक एफ ऑफ एक्स को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना है, दूसरे में एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस एन एक्स करके इंटीग्रेट करना है, और तीसरे में एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स. तो जहां पे भी एफ ऑफ एक्स एल्जेब्रिक फंक्शन है, वी हैव टू अप्लाई द जनरलाइज्ड रूल ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. और उसके बाद अप्लाई द अपर लिमिट, लोअर लिमिट. साइन एन पाई इज ऑलवेज इक्वल टू 0 and cos n pi is -1 raised to n. So cos of odd multiple of pi is -1 and even multiple of pi is 1. So here we have cos 2n pi, which is an even multiple of pi. That is why we get 1 here. This minus is already there. तो ये 0 हो गया, ये वाला ऐसे लिख दिया, ये 0 है, बाकी सब 0 है. तो क्या बचता है आंसर में? We will have only 4 pi upon n square. Minus into minus is also plus. So 1 by pi into 4 pi upon n square. Or the answer is only 4 by n square. Correct. 4 by n square. Yes. Right. ठीक है? If you do it ना, आराम से समझ में आ जाए कैसे करना है हमको. प्रैक्टिस एक बार करना पड़ेगा कैसे u इंटू वी अप्लाई करना है, अपर लिमिट, लोअर लिमिट. डू इट स्टेप बाय स्टेप. एक दो स्टेप एक्स्ट्रा भी करना पड़े तो भी चलेगा, बट डू इट स्टेप बाय स्टेप. ओनली थिंग, ऑलवेज ट्राई टू राइट दिस इन ब्रैकेट्स ओनली. इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन, गो ऑन डूइंग इट इन ब्रैकेट्स ओनली, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन इन द साइंस ऑल्सो. यहाँ पे बहुत मिस्टेक्स होते हैं बच्चों के नॉर्मली, जब हम लोग माइंड में करते हैं ना, माइनस इंटू माइनस प्लस करके, जब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. तो बेटर डोंट डू एनीथिंग, जैसा फॉर्मूला है वैसे का वैसे लिखो और नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लो. ठीक है, नेक्स्ट वी विल कैलकुलेट bn. Try bn, I'll show that. Try bn, just start doing it. bn f of x into sin nx. f of x is equal to bn is equal to 1 by pi. हमेशा 1 by pi कॉमन रहेगा, इंटीग्रल का लिमिट्स भी सेम रहेगा, खाली अंदर रहेगा x स्क्वायर इंटू साइन एन एक्स अगर bn निकालना है तो. फिर से u इंटू वी अप्लाई करना है हमको, और देन अप्लाई द अपर लिमिट, लोअर लिमिट, इसकी वैल्यू निकालनी है. जस्ट राइट u इंटू वी. पहला u लिखना है, इंटेग्रल v लिखना है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ u, और इंटेग्रल v को इंटीग्रेट करना है. फिर से प्लस डेरिवेटिव ऑफ u, गो ऑन डिफरेंशिएटिंग द u टर्म, इंटीग्रेटिंग द इंटेग्रल v टर्म, एंड अप्लाई द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. फिर से वही अप्लाई किया है मैंने यहाँ पे भी. एक्स स्क्वायर को u लेना है, साइन एन एक्स को v लेना है, तो u इंटेग्रल v. दिस फॉर्मूला एवरीबॉडी नोज. u v का तो फर्स्ट टर्म होता है, u इंटेग्रल v होता है, तो यहाँ पे भी u इंटेग्रल v माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, इसका 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 इंटीग्रेशन, सॉरी इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव 2, इसका इंटीग्रेशन cos nx अपॉन nq. Is it okay or is there any mistake in the signs? Right है सब. साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस का इंटीग्रेशन माइनस साइन का अगेन इंटीग्रेशन इज कॉस. एक पहले इंटीग्रेशन में तो n आएगा, दूसरी बार इंटीग्रेट किया तो n स्क्वायर नीचे आएगा, और तीसरी बार किया तो n क्यूब हो जाएगा. और u का जो है डेरिवेटिव निकालते जाने का, एक्स स्क्वायर 2x एंड देन 2. Okay, now apply the upper limit and the lower limit. Upper limit में भी cos n pi is, cos sin of any multiple of pi is 0, cos of even multiple of pi is 1,
cos of odd multiple of pi is minus 1. Substituting the upper limit and the lower limit. Again 2 pi the whole square, x के बदले 2 pi, 2 into 2 pi minus everything I've written as it is. जहाँ पे 0 होता है उसको मैंने वैसे ही लिख दिया. When x is 0, this term is 0, second term is 0, and here when x is 0, cos 0 is 1, so I have written 1 upon n cube. Apply the upper limit minus the lower limit. तो जितने sin n pi के टर्म्स है वो सब 0 हो जाएंगे. ठीक है, खाली cos n pi, cos का टर्म हमको सिंप्लीफाई करना है. And cos 2n pi, cos of even multiple of pi is 1. So cos of 2n pi is an even multiple of pi, which means that this is also 1, this is also 1, along with this minus sign. Simplify करो, क्या आएगा? Okay, this we know, it is cos n pi minus 1 raised to n, sin n pi 0. Now here, if you simplify 4 pi square, cos 2n pi is 1, bn is minus 4 pi by n. Okay, very good. So minus 1 by n, ये 0, यहाँ पे ये term cos 2n pi is 1. So if you simplify everything, minus 4 pi square by n, 2 by n cube, minus 2 by n cube. These two terms gets cancelled. We will get 1 by pi into minus 4 pi square by n. That is equal to minus 4 pi by n. Correct. Yes, all of you have got the right answers. Very good. ठीक है, इट इज मेनली हमने क्या अप्लाई किया है, cos n pi का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, cos sin n pi का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है, एंड u भी अप्लाई किया और कुछ नहीं किया हमने. ठीक है, now substitute a0, an and bn in the Fourier series. F of x is equal to, that is going to be the answer. Okay, now substituting a0 हमारा क्या आया था, 8 pi square by something we got. Substituting all these a0, an and bn पूरा हमें वहां पे substitute करना है और Fourier series लिखना है. Okay, all these steps are not required. You can directly also when you apply upper limit, इसका आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं. मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, but that is not required again. Substitute everything in the Fourier series. Substitute the values of a0, an and bn. These are a0, an and bn. Substituting everything in f of x. a0 by 2 हो जाएगा 8 pi square by 6. an के बदले 4n square और bn के बदले minus 4 pi upon n into sin nx. Maybe we can simplify further. 8 and 6 will become 4 by 3. And so maybe 4 you can take it out, n, no, 4 you can take it out because n is varying from 1 to infinity. Okay, so this is the Fourier series. Now after the question, there is something deduce that. Okay, you are asked to prove some result. This is the deduce that part. Find the Fourier series for the function f of x equal to x square in 0 to 2 pi and hence deduce this part. अभी हमें यहां से हमें ये वाला पार्ट निकालना है. Okay, from this expression we have to get the series pi square by 12 is equal to 1 by 1 square minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square, etc. What is that? X is equal to what is that, Madhusudan? I didn't get that. Substitution बता रहे हो क्या? X is equal to okay, डिडक्शन में हाँ yes. तो अभी हाँ अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, there is no cos nx or sin nx in this whole expression. So we have to give some value of x, not n. N is already varying from 1 to infinity.
we have to give some value of x in such a way that we get this expression. ठीक है, अभी देखो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे टर्म्स कौन कौन से हैं. इन द डिडक्शन वी आर हैविंग 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. ये कब मिलेगा, जब हम लोग यहाँ पे n को 1 पुट करेंगे, n को 2 पुट करेंगे, n को 3 पुट करेंगे, तो वी विल गेट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर. Okay, which means that this term is not there in the deduction. This term is not there in the deduction. मतलब sin x का जो पार्ट है वो नहीं रहना चाहिए. तो हमें x की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी in such a way that this whole terms become 0. What should be the value of x so that sin function becomes 0? Okay. Why not 0? Yeah, okay. Why not 0? Some said pi, some said 0. Why you have to apply pi and why you have to apply 0? What is the reason? Okay. अगर मैंने x को 0 पुट किया, सपोज, ठीक है, अगर मैंने x को 0 पुट किया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. cos 0 will become 1. cos 0 will become 1. लेकिन अगर cos 0 1 आ गया और अगर हम n को 1 2 3 पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4/1 स्क्वायर प्लस 4/2 स्क्वायर प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 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 आएगा. लेकिन हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस चाहिए. ओके, अगर हम x को 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव रहेगा. हमें यहाँ पे ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस चाहिए, इसीलिए x की वैल्यू हमें ऐसे पुट करनी है जिसका साइन फंक्शन 0 होता है और कॉस फंक्शन ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस आता है. 2 पाई नहीं, 2 पाई हमेशा पॉजिटिव रहता है. 2 यस, x इज इक्वल टू पाई. 2 पाई हमेशा पॉजिटिव रहता है. ओके, सो 2 पाई वी कैन नॉट पुट. हमें ऐसा x पुट करना है जिससे जब n की वैल्यू 1 हो तो मतलब एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो. यस, Jaswant, how did you type that pi? Nice. Okay, so x is equal to pi. अगर हम x को pi पुट करेंगे, okay, very good, nice. When x is equal to pi, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आ जाएगा cos pi. cos pi की वैल्यू -1. n को अगर 2 पुट करेंगे तो cos 2 pi हो जाएगा. cos 2 pi हो जाएगा +1. फिर n की वैल्यू 3 तो -1. तो यू विल गेट ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस. तो पुटिंग x इज इक्वल टू पाई. दो ऑप्शन थे हमारे पास, x इक्वल टू 0 भी हो सकता था और x इक्वल टू पाई. अगर हमने x को 0 पुट किया तो हमारा ये साइन नेगेटिव साइन, हर चीज पॉजिटिव हो जाएगा. ओके, फॉर दैट रीजन ओनली वी आर पुटिंग x इज इक्वल टू पाई सो दैट वी गेट ऑल्टरनेट प्लस एंड माइनस साइंस. ठीक है, तो अब हमें क्या पुट करना है फिर, x इज इक्वल टू पाई. ओके, तो पुट x इज इक्वल टू पाई. तो हर एक जगह x के बदले पाई पुट करना है, तो यहाँ पे भी पाई हो जाएगा. सो वी विल गेट पाई स्क्वायर इक्वल टू 4 pi square by 3 summation 4 by n square cos n pi, and sin n pi is 0, so I have not written that term. Now give the values of n as 1 to infinity. Put n is equal to 1, write the first term. Put n is equal to 2, write the second term. Okay, so just simplify. Put n is equal to 1, 2, 3, etc. and write the series. तो पहला टर्म क्या आएगा, when n is equal to 1, 4 by 1 square cos of pi. Cos pi is -1, so I have written a minus sign over here. Next, n को 2 put करना है, so I will get 4/2 square cos 2 pi. Cos 2 pi is 1, इसलिए positive sign. फिर n is equal to 3, तो 4/3 square cos 3 pi. Cos 3 pi is again negative. ठीक है, तो हमें x को pi put करना है and then give the values of n is equal to 1 to infinity. We will take 1, 2 or 3 terms and then plus etc. we can write. Now take all pi square terms to one side. Take all pi square term, तो ये 4 pi square 3 को भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे. तो pi square minus 4 pi square by 3 is -4 by 1 square, 4 by 2 square minus 4 by 3 square. Simplify the left hand side.
If you take the LCM, 3 pi square minus 4 pi square by 3 will become minus pi square by 3 is equal to minus 4 by 1 square plus 4 by 2 square. So we can cancel out, multiply throughout by minus sign, so that we will get pi square by 3 equal to this, and this 4 can also be taken to the left hand side. So we will get pi square by 12 is equal to 1 by 1 square minus 1 by 2 square plus, this is plus again. Change that, this plus, plus 1 by 3 square. ये माइनस जो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है. So put the values of x accordingly in such a way that we get the required. कभी कभी x को 0 put करना पड़ता है, कभी pi by 2 put करना पड़ता है. I think Madhusudan, what did you say? It's pi by 2 something, no? One second, I'll just check your chat. You said pi by 2 square root of 3. Why that way? I didn't get that part. X is equal to pi by 2 square root of 3. Okay, the thing is, we should not get this. We are having only square cut term. So we want only n square term, n is not required. When n is not required, means sign has to become 0. The sign becomes 0 for x equal to 0 or x equal to pi. So we will try with x equal to 0. When we put x equal to 0, this becomes 1, but then we won't have alternate plus and minus. When you put x is equal to pi, then we get alternate plus and minus. Okay, that is why we have to put x is equal to pi. Okay, है थोड़ा लेंदी, बट देन एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स है. गो ऑन डूइंग दैट. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम्स आ गए, आई डू अंडरस्टैंड, बट फॉर्मूला के ऊपर है. अगर फॉर्मूला रॉन्ग है तो 0 मार्क्स. पूरा फॉर्मूला के ऊपर है इसका. वंस यू राइट द फॉर्मूला, यू कैन ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट दैट. अगर फॉर्मूला ही गलत लिखा तो एवरीथिंग विल गो रॉन्ग एंड देन यू वोंट गेट एनी मार्क्स फॉर स्टेप्स आल्सो. फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. The next problem. Find a Fourier series to represent f of x is equal to e raised to ax in 0 to 2 pi. Why this problem come with deduction part always not necessary. कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है. कभी कभी 8 मार्क्स से क्या करते हैं वो 3 इसको पूछते हैं और मे बी 1 मार्क दे कीप फॉर डिडक्शन पार्ट और 2 मार्क्स फॉर डिडक्शन पार्ट आल्सो. तो नॉर्मली कैसा रहता है, 1 मार्क फॉर a0, 2 marks for an, then next 2 marks for or 3 marks depending upon कैसे पूछते हैं उसके ऊपर रहता है. 1 mark for writing the series and then you have deduction, maybe 1 or 2 marks like that. It's divided that way depending upon अगर 8 marks का है या 6 marks का है. But अगर तीनों के तीनों निकालने हैं तो it is 8 marks only. 8 mark का ही क्वेश्चन आता है इसमें. We have some other concepts, but the formula remains the same everywhere. 1 upon pi integral 0 to pi f of x dx. 1 upon pi integral 0 to pi f of x cos mx. तो वही फॉर्मूला में हमें करना है पूरा. ओके, सो पहले हमको सीरीज लिखना है. उसके बाद हमें a0 निकालना है, an निकालना है, bn निकालना है. a0 में हम क्या करते हैं, ये फंक्शन को एज इट इज इंटीग्रेट करते हैं. an में this function multiplied by cos nx. bn में integration of this function multiplied by sin nx. Okay, so try a0 first. f of x is equal to e raised to ax in 0 to 2 pi. जो इंटरवल दिया है वही लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी हो जाएगा. Okay, so what is a0? Again, 0 to 1 by pi integral 0 to 2 pi e raised to ax dx. Integrate e raised to ax. e raised to ax का इंटीग्रेशन हो जाता है e raised to ax upon a.
apply the upper limit and the lower limit. Put x is equal to 2 pi and x is equal to 0. तो ये हो जाएगा a pi बाहर लिया, x के बदले 2 pi, and when x is 0, e raised to 0 is 1. Can we simplify further? E raised to 2a pi की कुछ वैल्यू है? E raised to 2a pi. Do we have any value for e raised to 2a pi? We have the function e raised to I. अगर है तो हम लोग cos और sin में लिख सकते हैं. Okay? There is no e raised to I theta. It is only e raised to. So there is no function. We have to keep it as it is. अगर यहाँ पे कुछ I वगैरह है तो we can write e raised to I theta as cos theta plus I sin theta and then simplify that. तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, इसको वैसे का वैसे ही रखना. That part is over. Now calculate an. Next we have to calculate an. जो फंक्शन दिया है उसको एज इट इज इंटीग्रेट किया तो a0 मिलता है. And outside 1 by pi, many students they forget this 1 by pi here. So here 1 by pi is outside, and then whatever is the integration limits are given, that will come, and then the function into dx. So try try an then. An is equal to 1 by pi integral 0 to 2 pi, जो भी function था, that is multiplied by cos nx dx. Anybody remembers this formula? We have used this formula many times. E raised to ax into cos bx plus c or cos bx. याद है किसी को? We had used this formula also. E raised to ax upon a square plus b square into. This is also a requirement. E raised to ax cos bx dx is e raised to ax upon a square plus b square into पहला a cos का डेरिवेटिव sin तो plus b sin. Similarly अगर यहाँ पे sin है तो पहले a sin आएगा, sin का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन sin, तो sin का इंटीग्रेशन minus cos, so you get a minus sign when we have sin function. Using this formula directly, या फिर u into v करना पड़ेगा, but that is again a lengthy procedure here also. So try to by heart this formula e raised to ax into cos bx. Laplace when we had used it, we had used in convolution theorem also. Many places we had applied this. Wherever integration part comes, this formula is uv, this one, and then substitution method. नहीं याद आता, you can do u into v. लेकिन better to apply this formula. याद रखना भी difficult नहीं है. पहला फंक्शन लेना है e raised to ax, उसको डिवाइड करना है जो भी कोएफिशिएंट ऑफ x दिया है. e raised to ax में कोएफिशिएंट ऑफ x a है तो a स्क्वायर लिखना है. यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x b है तो b स्क्वायर लिखना है. फिर जो पहला टर्म है a इंटू जो दिया है cos प्लस b इंटू साइन. क्यों प्लस आता है? बिकॉज cos का इंटीग्रेशन इज साइन प्लस साइन. दैट इज व्हाई वी गेट प्लस. ओके, सब्स्टिट्यूट ओवर हियर. a के बदले a है, b के बदले n है. Substituting here, e raised to ax upon a square plus n square, a cos nx plus n sin nx. b के बदले n है. Between the limit 0 and 2 pi. Just apply the upper limit and keep the answer. Apply the upper limit and the lower limit. Whatever answer you get, keep it as it is. Put x is equal to 2 pi, upper limit. So 1 upon pi, e raised to 2a pi upon a square plus n square, a cos 2n pi plus n sin 2n pi, and when x is 0, minus 1 upon a square plus n square. When x is 0, this is 1, and sin 0 is 0.
We will have only A. Applying the upper limit and the lower limit. Sine 0 is 0, cos 0 is 1. That is why we get A over here, and this term will become 0. Here e raised to 0 is also equal to 1. Again, sine n pi is 0, cos 2n pi is 1. Again, simplifying and writing. So e raised to 2a pi upon n square plus a square, cos 2n pi is 1, तो खाली a बचेगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, minus 1 upon a square plus n square into a. You can take maybe the common terms outside or leave it like that, nothing wrong. a को बाहर ले सकते हैं, square plus n square को बाहर ले सकते हैं. We can simplify it in any form. This term also can be taken out, a square plus n square. This is A. Similarly, Bn. Similarly, calculate Bn. सेम फॉर्मूला, लेकिन साइन बी एक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जब बी एन निकालेंगे हम लोग. सेम फॉर्मूला, खाली यहाँ पे ए साइन आता है और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, इसके लिए माइनस बी कॉस बी एक्स आ जाता है. यू कैन ट्राई यूजिंग यू इनटू वी आल्सो एंड गेट द सेम फॉर्मूला. वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन दैट इज नॉट डायरेक्ट मेथड. यू हैव टू एड एंड सब्ट्रैक्ट, द मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कुछ कुछ तो करना होता है, तब जाके ये फॉर्मूला के फॉर्म में आता है. Apply the formula and then apply the upper limit, lower limit, simplify. That will be Bn. B के बदले n है यहाँ पे, तो e raised to ax upon a square plus n square, a sin bx minus b cos bx. b के बदले n है यहाँ पे, तो a square plus n square, a sin nx minus n cos nx between 0 and 2 pi. Apply the upper limit, lower limit, x is equal to 2 pi and x is equal to 0. Write the final answer. Applying the upper limit. Remember, sin n pi is 0. तो जितने भी sin n pi के टर्म्स है वो 0 हो जाएंगे. Cos 2n pi 1 हो जाएगा. Cos 0 is also 1. Simplify accordingly. Sin 2n pi is 0. Cos 2n pi is 1. So minus n बचेगा. We can take minus n by pi. Anyway, we can simplify that. Substitute all these coefficients in the Fourier series expansion
and write f of x equal to substituting a0, an and bn in the function f of x equal to a0, an and bn values are there. Substitute everything in f of x. Right. There is no deduction part here. Only we have to just calculate a0, an and bn and substitute in this function f of x. As it is मैंने substitute किया, कुछ नहीं किया है. Maybe you cannot simplify further. Maybe e raised to 2a pi is common every way. We can take that part common and then simplify. वो भी करना है. It's not compulsory. You can leave the answer in this form also. पहले मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, उसके बाद ये जो e raised to इसको कंबाइन, क्योंकि a square plus n square is common denominator, तो न्यूमेटर को कंबाइन किया है, एंड देन e raised to 2a pi minus 1 is common everywhere. That is taken out. तो 1/2a, फिर इसके अंदर का a into cos nx बचता है, और यहाँ पे n को हम बाहर नहीं निकाल सकते बिकॉज n has to be given the values from 1 to infinity. तो n का पार्ट जो है समेशन n के अंदर ही रखना है, समेशन के अंदर ही n का पार्ट रखना है. ओके okay? But you can leave the answer in this form. This was the book answer, so I just tried to bring it to that one. But you can leave the answer in this form also, nothing wrong. इतने सारे टर्म्स है कि देख के डरते कौन सा प्रॉब्लम है, बट देयर इज नथिंग एक्चुअली. इट्स ओनली इंटीग्रेशन एंड अप्लाइंग द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. ऐसे बड़े बड़े इंटीग्रेशंस भी नहीं है कि वी हैव टू रिमेंबर दोज इंटीग्रेशंस. Let's try this part. Find a Fourier series to represent f of x is equal to. It's defined in two intervals, x0 less than or equal to x less than or equal to pi, and it's equal to 2 pi minus x, pi less than or equal to x less than or equal to 2 pi. Show previous slide. फिर से हमें now the function is defined in 0 to 2 pi. तो जो फॉर्मूला रहेगा वो सेम ही रहेगा. ओके, a0 क्या हो जाएगा 1/pi इंटीग्रल 0 to pi f of x dx. लेकिन यहाँ पे 0 to pi में एक सिंगल फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0 to pi को हमें 0 to pi को हमें 0 to pi और pi plus 2 pi लिखना पड़ेगा. ओके, फॉर्मूला विल रिमेन द सेम फ्रॉम 0 to 2 pi. Then write 0 to 2 pi as
0 to pi plus pi to 2 pi. Why we are doing? Because the function is not defined in the interval 0 to 2 pi. It is defined in two intervals. तो हमें इसको स्प्लिट करना पड़ेगा 0 to pi को 0 to pi और देन pi to 2 pi. तो 0 to pi में x डिफाइंड है और pi to 2 pi में 2 pi minus x है. अभी दोनों को इंटीग्रेट करना पड़ेगा. Integrating both the limits, both the integrations with the corresponding limits. तो यहाँ पे 0 to pi है, यहाँ पे pi to 2 pi है. So integrate this, x का derivative x square by 2. 2 pi is the constant. Integration of 2 pi will become 2 pi x. Again x का x square by 2. तो second term का limits है pi to 2 pi और इसका limit है 0 to pi. Apply the upper limit and the lower limit. Same procedure, but it is not given in one single integral. That is why we have two different. We have to write 0 to 2 pi as 0 to pi plus pi to 2 pi. Apply the upper limit. यहाँ पे pi put करना है तो pi square by 2, lower limit 0, upper limit 2 pi into 2 pi, again 4 pi square minus 4 pi square by 2. फिर x को pi put करना है तो 2 pi square minus pi square by 2. Applying the upper limit and the lower limit. Simplify and tell me what should be the answer. सब pi square वाले term है, खाली constants है उसके साथ, तो सबको simplify करना है and see what is the answer you get. A0. Pi. Okay. Let's check the answer. What about others? सिंप्लीफाई करना है, सब पाई स्क्वायर वाले टर्म है, सबके कोएफिशिएंट सिंप्लीफाई करो. अभी जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2 पाई स्क्वायर -2 पाई स्क्वायर. यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर है तो 4 पाई स्क्वायर -2 पाई स्क्वायर -2 पाई स्क्वायर 0 हो गया. पाई स्क्वायर बाय 2 प्लस पाई स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर बाय 2, दैट इज पाई स्क्वायर. पाई स्क्वायर अपॉन पाई इज पाई. करेक्ट. सो इट इज इक्वल टू पाई. यस, गुड. नेक्स्ट इज an. सेम मेथड हमें करना है, खाली यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि दो इंटरवल्स रहेंगे, बाकी कुछ नहीं है. an. Same way, an is defined in 0 to 2 pi, but the function is not defined in 0 to 2 pi. So split this integral 0 to 2 pi to 0 to pi plus pi to 2 pi. 0 to pi में x and this में 2 pi minus x. फिर से u into v अप्लाई करना है, जैसे हमने फर्स्ट प्रॉब्लम में किया. इट्स एन अलजेब्रिक फंक्शन. इसको भी स्प्लिट नहीं करना है, ये पूरे फंक्शन को u लेना है हमको. ओके. सेकेंड में भी ये u है, ये v है, इसमें भी ये पूरा ब्रैकेट टर्म u है और ये v है. डोंट स्प्लिट दिस, बहुत बड़ा हो जाता है. डोंट स्प्लिट दैट, कीप इट एज इट इज. फिर से u into v अप्लाई करो. सेम वे u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस x का डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन 2 पाई माइनस x को u लिया है तो ये u हो गया. इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा -1, फिर इसका इंटीग्रेशन. अप्लाई द अपर लिमिट, लोअर लिमिट. सेम ही है, खाली यहाँ पे दो इंटरवल्स में डिफाइन थोड़ा बड़ा है, और बड़ा है उससे, पहले वाले से बड़ा है. Apply the upper limit and the lower limit. Calculate an, similarly calculate bn, and substitute everything in the function f of z, f of x. Sorry. अगर यहाँ पे x को पाई पुट किया तो ये 0, ये हो जाएगा cos n pi. Okay? When I apply the upper limit, sin n pi is 0. तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस cos n pi by n square. लोअर लिमिट में x is 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा. लोअर लिमिट का माइनस साइन, cos 0 is 1 upon n square. माइनस यहाँ पे अपर लिमिट 2 pi minus 2 pi 0, माइनस माइनस माइनस, सो माइनस साइन, cos 2 pi is 1, तो 1 upon n square. Then lower limit sin n pi is 0, cos n pi is as it is.
You can combine this, and we know that cos n pi is equal to minus 1 raised to n. There is some mistake here. It should have been minus 1 plus cos n pi, I think. Because minus 1 here, 2, minus 2 and minus 2. This answer is right, but there is slight mistake over here. Sign changes it. Okay, you can try this. an मैंने आधा कर दिया, वैसे bn निकालना है और f of x में substitute करना है. Just try this. I will share this PPT. Same UV method हमको apply करना है. There is a mistake in the sign over here. This one is right. ऐसे ही bn निकालना है. वही मेथड अप्लाई करना है. अपर लिमिट, लोअर लिमिट, एवरीथिंग इज सेम. यहाँ पे आंसर bn का 0 आ जाता है. Substituting everything in the f of x function and writing the Fourier series. I've given 2 problems for practice. Also, just try those problems, express those functions in as a Fourier series. Okay. It's totally based on the formula, nothing else. Write the formula and then substitute the function, integrate. So we'll continue in the next lecture. We'll do more problems, different types of problems under this. Let's do practice sums on this type. This also can complete the next 2 problems I've given as a practice problems. Please try it. So thank you all. Thank you. Thank you. PPT formula, I've already sent the formula server. Already is there in the Google Classroom. यहाँ पे एक फॉर्मूलाज करके मैंने दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, प्री रिक्विजिट्स भी दिए हुए हैं मैंने, सब कुछ है गूगल क्लासरूम में. जस्ट गो थ्रू दैट. Tutorial 3 also I will give it.